महोदय के आगमन की सूचना मिली।
सज्जनों, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हम सब के बीच पधार रहे हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करें। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन। श्री चक्रधर त्रिपाठी जी, गोविंद प्रसाद शर्मा जी, शांति श्री दूलीपुड़ी पंडित जी और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर वी कामकोटी जी, मद्रास से आईआईटी डायरेक्टर। तो ये हमारे इस सत्र में इन सभी विभूतियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार आपके करतल ध्वनि के साथ। गोविंद प्रसाद शर्मा जी, सर बैठें प्लीज। देव सज्जनों, ये सत्र, इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए और इस बात में एक विशिष्टता ये जुड़ी है कि आज बहुत ही प्रख्यात लेखक और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी की गरिमामयी उपस्थिति मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस सत्र में है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आपके करतल ध्वनि के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सत्र में हम सबके बीच प्रख्यात शिक्षाविद और लेखक चक्रधर त्रिपाठी जी, अध्यक्ष नेशनल बुक ट्रस्ट गोविंद प्रसाद शर्मा जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी और डायरेक्टर आईआईटी मद्रास प्रोफेसर वी कामकोटी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज का एक पैनल है जिसमें शिक्षा को लेकर आज चर्चा होने जा रही है। हमारे लिए बहुत एक प्रेरक और ज्ञानवर्धक सत्र होगा। सत्र की शुरुआत हो उसके पहले आइए हम सब एक बार अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए और उसके बाद आगे की कार्यवाही जो है वो जारी रहेगी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें और मैं निवेदन करूंगा, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव साहब से कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन यहाँ उन्हें शॉल भेंट करके करें। छत्तीसगढ़ से इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद इस सत्र में विशेष रूप से उनकी उपस्थिति हम सबको बहुत प्रेरित कर रही है और लेखक, विद्वान और एक राजनेता के रूप में और वर्तमान में राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका और उनके योगदान को हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं और उसका वंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। मैं राव साहब से, डॉक्टर राव से निवेदन करूंगा हमारे बीच यहाँ विराजमान चक्रधर त्रिपाठी जी, गोविंद प्रसाद शर्मा जी, उनका अंगवस्त्र भेंट करके उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें। और इन सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन करते हुए इस सत्र की हम शुरुआत करेंगे। इस क्रम में गोविंद प्रसाद शर्मा जी, अध्यक्ष एनबीटी, करतल ध्वनि आपकी तरफ से उनके लिए भी होनी चाहिए। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और चक्रधर त्रिपाठी जी, प्रख्यात शिक्षाविद, लेखक और विद्वान के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, उन सभी का वंदन, अभिनंदन और निवेदन डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी, सचिव साहित्य अकादमी, कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। Namaskar and good morning to all of you. Respected Sri Vishwabhushan Harichandan ji, Honorable Governor of Chhattisgarh, Professor Shanti Sri Dhulipudi Pandit ji, Vice Chancellor Jawaharlal Nehru University, Professor Chakradhar Tripathi ji, Vice Chancellor Central University of Odisha,
Sri Govind Prasad Sharma ji, Chairman of National Book Trust India, Professor V. Kamakoti ji, Director IIT Madras, who will join virtually, Honorable friends of Sahitya Academy. I am glad to welcome all of you for this discussion on creativity boosting education. Eminent educationists and distinguished scholars are part of this panel. So I don't want to talk much, but just want to touch on those points that led to the creation of this session in this festival. All education is meant to trigger creativity in the learners and enable the efflorescence of personalities to make the society meaningfulness. There have been debates for over hundreds of years or so on whether creativity can be linked to formal classroom education system. Without resorting to the details of those discussions, one can safely say that when enough freedom is provided within the system, formal educational systems across the world can and should produce sufficient number of creative learners. Are the current systems not producing enough creative people? That is a question. I don't think so, and there are plenty of creative people who have come through the same system like everyone else. So, what are the changes needed in the current formal education model to ensure that majority of the learners come through with their creativity ignited, especially at the primary school level, and what are the steps needed to nourish them till the end of university education? These are some of the thoughts with multiple perspectives that led to the creation of this session. Who else but the best minds in the system to discuss this? We are proud to bring together all of you, and I sincerely hope the audience thoroughly enjoy the discussion and stand benefited from it. With these few words, I welcome the honorable dignitaries on the dais and off the dais. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी, सचिव साहित्य अकादमी। दिव्य सज्जनों, हम सब जानते हैं क्योंकि माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ओडिशा से यहाँ जब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हुए उससे पहले आंध्र प्रदेश के भी आप राज्यपाल रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साहित्यकार के रूप में, नाटककार के रूप में, लेखक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा और आपकी ख्याति है। प्रकाशित जो कृतियां हैं आपकी, उसमें एक नाटक, 6 एकांकी नाटक, एक लघु कथा संग्रह, एक निबंध संग्रह और इस तरह की बहुत सारी, और आत्मकथा भी उसमें शामिल है। इस तरह की बहुत सारी कृतियों को उन्होंने आकार और साकार किया है। एक प्रतिष्ठित स्तंभकार कॉलमनिस्ट के रूप में उनके जो लेख हैं वो राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर तमाम प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नियमित रूप से छपते रहे हैं और बहुत लोग रुचि के साथ उन्हें पढ़ते रहे हैं क्योंकि उससे बहुत प्रेरणा भी मिलती रही है। आप कलिंग रत्न पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। आज हम सबका सम्मान है कि आप हम सबके बीच पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी से कि वे आरंभ में अपना आशीष, अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। निवेदन राज्यपाल महोदय से उनके संबोधन के लिए। Sri Chakradhar Tripathi, Vice Chancellor, Central University of Odisha, Srimati Shantishri Puripudi Pandit, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University, Sri Govinda Prasad Sharma, Chairman, National Book Trust, India, Sri B. Kamakoti, Director IIT, Madras, all the guests on the dais and of the
dash, distinguished literary persons coming from all over the country and outside the country, ladies and gentlemen, and friends of the media. I am very glad to participate in International Literary Festival Bhopal here. Today's session, the topic creativity boosting education is apt in modern themes. Creativity is not just an ephemeral spark of inspiration. It is the catalyst that fuels innovation and progress. It is the driving force behind human development, and when integrated into education, it has the power to transform traditional learning into an exciting and dynamic journey of discovery. Famous scientist Benjamin Franklin once said that, "Tell me and I forget, teach me and I remember, invoke me, I learn." This is true to the core. In our country, since Vedic times, education was provided through Gurukul Parampara, and students learned many things directly from the nature. Noble literate, our beloved Guru Rabindranath Tagore also believed that we could learn easily from the nature. Therefore, he started Vishwabharati Shantiniketan institution near Calcutta, where classes were held in the open, in the lap of nature, and students learn from surrounding and environment. Mahatma Gandhi ji says about education that by education I mean an all-round drawing out of the best in the child, man, body, mind and spirit. Literacy is not the end of education, not even the beginning. Gandhiji thought that education is closely associated with the socio-economic development of the society and stimulates the human mind for creative thinking of dignity of manual labor. He thought that such creativity thinking should be taken up from primary to higher level education. His views on basic education is greatly influenced by the philosophy of truth, non-violence, firm belief in God, and dignity of labor. It has been established that creativity fosters a deeper understanding of academic subjects. When students are encouraged to think creativity, they are not confined to rote memorization. Instead, they explore various perspectives and experiment with different solutions. This process enhances their critical thinking skills and enable them to grasp complex concepts with greater gain. Moreover, creativity breeds curiosity. It compels students to question the world around them and seek answers beyond the boundaries of the textbooks. By nurturing their innate inquisitiveness, by nurturing their
in a continuous education becomes fun rather than a tedious task. Curious minds are more engaged and motivated to learn, making the education experience more meaningful and lasting. Creativity nurtures resilience. When students are encouraged to think outside the scope, they learn to embrace failures as stepping stones to success. They understand that mistakes are not something to be feared, but valuable lessons which can be used to refine their ideas and approaches. This resilience is an essential life skill that goes beyond the classroom, preparing them to face challenges in their personal and professional lives. Beyond academic excellence, creativity also cultivates empathy and emotional intelligence. When students are encouraged to express themselves through art, writing, or any other creative medium, they develop a deeper understanding of their own emotions and the feeling of others. This empathy from a strong foundation of a more compassionate society. Moreover, as we move into an era of rapid technological advancement, creativity will become increasingly vital. Automation may handle many routine tasks, but creativity remains distinctly human. It is the source of new ideas, breaking through innovations, and the capacity to adapt to an ever-changing world. By nurturing creativity in education, we prepare our students to face the world boldly. To harness the power of creativity in education, we must foster an environment that encourages experimentation and risk-taking. Teachers should be empowered to introduce creative teaching methods that cater the diverse learning styles. We can say that creativity is the key to unlock the true potential of education. It enriches learning experiences, instills curiosity. So far as this creativity boosting education, I would say education would also boost creativity. Supposing you have no education, you have a dull mind, can you create anything? You must question everything. Why this happens? What is our responsibility? Why this nature? Questioning will have creativity. And creativity is not confined within the four walls of the classroom or the schools, colleges, or the universities. It is something different. And I am giving you one instance of Mahabharata. One day, Guru Dronacharya was moving inside the ashram in dead hour of the night to see actually what his disciples are doing. And he found that everybody was slept. But in a particular place, he found Arjun that is shooting arrows
to a particular target, one after another. He put his affectionate hand on his shoulder, and Arjun turned back and saw that it is Guru Dronacharya. He touched his feet and said, Gurudev, why are you moving in this dead of the night? I am surprised, Arjun, I have not done this sort of shooting the arrows in the dead hour of the night, in darkness. Where from you learnt it? He said, I learnt it from Bhima Bhaya. Dronacharya was surprised. He is not an archer. Absolutely have no idea about archer. Then he said, how you learnt? Now one day I went to his room and found that there was deep darkness, and within that darkness he was taking food. And he said that Arjun will take something. But he said, Bhimbhaya, how can I? There is darkness. How can I take anything? And Bhimbhaya said that your hand will go to the mouth, nowhere else. So, therefore, and from that I learnt that if within the darkness the hand is going to the mouth, then why within the darkness I cannot shoot my arrows to a particular target? And I turned to Dronacharya, blessed him, and said that this is creativity. And from this situation, it was creative. New education policy has many elements which will give creativity. Creativity is boosting education, and education is also boosting creativity. Take the instance of the COVID-19 pandemic. During COVID-19 pandemic, as you know, that this posed a great menace to the whole country, not the whole country, the entire humanity. And our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, asked the people of the country that you be determined, fight against COVID. And doctors were the frontline warriors. Save your nation, save the people. And actually they did it. And at the same time, he asked the scientists, appeal to them, make research, and find out preventives, find out patients which will act as preventive. So our scientists, they produce such preventives and vaccines. As you know, the country with a population of 140 crores of people was saved. And we also provide vaccines to 50 other countries. Therefore, it will create something when there is really requirement. If there will be requirement, then the question of this creativity will come in. I am telling you one thing. It is not only the classroom of school or university. Creativity is something else. Take the instance of the great saint, poet, Bhima Bhoi. What he said, Pranika Arata Dukha Apramita Dekhu Dekhu Kiva Sahu Mujibana Pache Narke Padi Thau Jagata Uddhar Heu. He said that what is this world, the people, the animals, they are suffering, their different type of situation where suffering knows no bounds.
and we tolerate this. But let me go to hell. I am prepared to be in hell. But the entire world should be saved. The animals, the social animals like human beings, they should be saved. And he has no primary education. Living in dense forest, this saint poet, they have written such things. Therefore, only educational institutions are not the forums where we can develop education or boost creativity or boost education. And therefore, it is now in UN, it has been written in UN that this tongue of the great saint poet and this is the contribution of our rishis. Think about them. Our rishis inside the dense forest, looking at the trees, creepers, mountain, river, lake, sea, they question themselves. They created many things. And out of their thinking, out of their creativity, capability, many things have come out. They have shastras, which gives us knowledge. They have prepared medicines, which are unique in nature. And therefore, it is not only the classroom or the school, college or university where you can learn all these things. Recently, I had taken the meeting of the universities in Chhattisgarh. And one of the vice chancellors, while giving the reports, he said that we are doing yoga in our university. Everybody must have yoga, and thereafter they will go to their classroom and they will be taught the lessons. I was surprised that we are doing it, and I made an appeal to all other vice chancellors to have such practice. Because yoga is a great contribution to the world. Yoga not only develops mind, spirit, body, everything. And yoga is the greatest contribution of India to the world. And with the appeal of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi, yoga is now observed all over the world. And now a yoga day is observed due to the appeal of UN. And our Prime Minister had done this great thing, and we are proud of our yoga. And therefore, many things are to learn. This education will boost creativity. Creativity will also boost education. So, such a subject where all learned people who have come, we will discuss about this subject, and due to our discussion, many things will come out about boosting creativity, boosting education, and education is boosting creativity, and everybody will be, this will be a great contribution to the society, to the country, and the world at large. Thank you all. Jai Jagannath. बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, जिन्होंने शिक्षा में क्रिएटिविटी या जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, उसको नए आयाम और नए विस्तार के साथ हमारे सामने एक आसमान दिया है, जिस पर आगे की चर्चा हम करेंगे। आपके इन बिंदुओं के लिए, आपके इस दृष्टि के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का।
देवी सज्जनों, हमारे इस पैनल में, इस सत्र में बहुत प्रतिष्ठित शिक्षा के क्षेत्र की विभूतियां, जिनमें साहित्य में भी जिन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, हमारे साथ हैं, ऑफलाइन मंच पर भी और ऑनलाइन भी। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ऑनरेबल प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी को, जो कि वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। और चक्रधर त्रिपाठी जी ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की बहुत सारी जो वैधानिक समितियां होती हैं, एडवाइजरी कमिटीज़ होती हैं, इसके अलावा सिलेक्शन कमिटीज़ होती हैं, उसमें भारत के राष्ट्रपति के नॉमिनी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी 6 पुस्तकें भी पब्लिश हो चुकी हैं, जिनमें कबीर की भक्ति, नई कविता का प्रतिपाद्य, चिंतामणि संचयन, कृष्णचंद्र की प्रतिनिधि कहानियाँ और बंगाली संस्करण जो है आत्मनिर्भर भारत का, वो प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त 4 पुस्तकों का आपने संपादन भी किया है, 5 पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। इन सारे कामों के लिए और आपके निरंतर अनवरत योगदान के लिए बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार आपको मिले हैं। इनमें रजत पदक पुरस्कार, हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार, भाषा सेतु सम्मान, शिक्षक सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से हिंदी सेवी सम्मान आदि से आपको विभूषित किया गया है। आज हम सब सम्मानित महसूस कर रहे हैं आपको अपने बीच पाकर। मैं इस क्रम को आरंभ करूं, हमारे वक्ताओं को बारी बारी से एक निवेदन ज़रूर करूंगा। समय की सीमा है, क्योंकि आगे के सत्र भी हैं जो इसके बाद हम करेंगे, तो 10 मिनट का समय अगर उसके अंदर अपनी बात को आप रख सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आपकी करतल ध्वनि के साथ प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी। महामहिम आदरणीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़, प्रोफेसर शांतिश्री मैडम और डॉक्टर शर्मा जी, एनबीटी के चेयरमैन साहब, और ऑनलाइन पे उपस्थित महोदय और मेरे सामने यहाँ उपस्थित विद्वान मंडली। आज का विषय है सृजनात्मकता को बढ़ाने वाली शिक्षा। सृजन को बढ़ाने वाली शिक्षा, सृष्टि को बढ़ाने वाली शिक्षा। सृष्टि, हम भी एक सृष्टि हैं, किसी की सृष्टि हम हैं, सृष्टि के हम अभिन्न अंग हैं। देखिए हमारी सृष्टि, आपकी सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि, हर एक जीव जंतुओं की सृष्टि कैसी है, कितना बड़ा साइंस उसमें है, कितना संतुलन है। लेकिन जब हम उस साइंस को समझ नहीं पाते हैं, प्रकृति से तालमेल हमारा बिगड़ता है। सूर्योदय सूर्यास्त से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऋतुओं से हमें कोई मतलब नहीं है, पर्यावरण के प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है, और साथ ही जिन 5 तत्वों से हम सब बने हैं, यह पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी से ऊपर ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, जिसकी चर्चा भागवत में है, वेदों में है। हमारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी पर आप जरा ध्यान दें। जो कहते हैं बिंदु में समुद्र है, समुद्र में बिंदु है। जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड विलेज नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, तो यह जो सृजनशीलता है, व्यष्टि में समष्टि को पाना, हिंदी साहित्य, हिंदी संत साहित्य की शब्दावली में कहें, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड में ही ब्रह्मांड का साक्षात्कार करना, आंखें बंद कर लेना, यह क्रिएटिविटी है। मीरा और कबीर का जो प्रेम है, भगवान कृष्ण भगवान से मीरा का प्रेम, और जो विश्व ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं ईश्वर, उनसे कबीर का जो दाम्पत्य प्रेम है, यह क्रिएटिविटी है, सामान्य चीज नहीं है। पहली बार भारत ने ही कहा कि आत्मा, सारी आत्माएं स्त्री हैं, पुरुष तो एक है, ईश्वर है, और संसार में कोई पुरुष ही नहीं है। इसलिए सबको ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से
क्रिएटिविटी में लगना है। तो यह जो शिक्षा है भारत की, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से हमें प्राप्त होती है, जो शिक्षा, उस शिक्षा से हम धीरे धीरे विविध कारणों से हटते चले गए। 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, कुछ बदलाव आया, फिर अभी एक फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। हम सब देख रहे हैं, आज विश्व यह देख रहा है कि भारत का जो दर्शन है, भारत का जो विचार है, उससे विश्व का कल्याण हो सकता है। इसके लिए अभी हमारे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसका भी यही लक्ष्य है। खास करके साहित्यकार अपने आप में तो स्रष्टा होता ही है, अब शिक्षक को भी स्रष्टा बनने की जरूरत है। तो वो बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करेगा, सोचने की आजादी देगा, और पढ़ाना कम है, लिखाना कम है, सिखाना ज्यादा है। बच्चे खुद महसूस करें, खुद सवाल करें और उसका उत्तर निकालें। मैं अपने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में और साहित्य के क्षेत्र से मैं अपने ही विश्वविद्यालय से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अपने स्टेट ओडिशा में अंग्रेजी अनुवादकों और हिंदी अनुवादकों की संख्या बहुत कम है, नगण्य है। अंग्रेजी में तो बड़ी कमी है, हिंदी में कुछ मिल भी जाते हैं। तो उसके लिए एक प्रयोग है कि अंग्रेजी विभाग जो है अपने विश्वविद्यालय में छोटे ही स्तर पर 60 विद्यार्थी हैं एक क्लास में, दूसरे क्लास में 60 हैं। तो उन 60 विद्यार्थियों को हमने बांट दिया 5-5 ग्रुप में, 12 दूना 24 ग्रुप हो गए। 24 टीचर को हमने रखा, अपने यहाँ संसाधन है 5, तो 12-19 टीचर हम बाहर से लाए, सप्ताह में एक दिन। बच्चों को जो ग्रुप बना 5 का, हर बच्चे को एक पन्ना दिया गया, 5 बच्चों को एक ही पन्ना दिया गया अनुवाद करने के लिए। 5 का जो ग्रुप है वो एक ही पन्ने का अनुवाद करेगा और उनका दायित्व जो है उनका शिक्षक लेगा, जिसको रिमेडियल क्लास के रूप में हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कल्पना करें, जो विद्यार्थी है उसकी भाषिक सृजन क्षमता बनेगी, पकेगी, जमेगी। तो फिर जो उसका टीचर है वो भी देखेंगे, और फाइनली जो तथाकथित और सचमुच भी जो प्रसिद्ध अंग्रेजी के विद्वान हैं उनसे हम करवाएंगे। तो ये है, हिंदी में भी यही स्थिति है। इस तरह से अनुवाद के क्षेत्र में हम ओडिशा का जितना भी प्राचीन साहित्य है, जिसको अनुदित करने पर न आपको पद मिलेगा, न प्रतिष्ठा, न पैसा, नहीं मिलता है, उस काम को पहले करवाना है अपने ही बच्चों से। अपने ही बच्चों की प्रोडक्टिविटी पावर बढ़ेगी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। तो यह एक क्षेत्र हुआ। दूसरा क्षेत्र है कृषि विज्ञान। कृषि विश्वविद्यालय के प्राचार्य कुलपति से मैं मिला और हमने कहा कि आप जिस प्रांत में हैं उस प्रांत में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, तो फिर यहाँ अन्न का अभाव क्यों होता है? दूसरे प्रांत से दाल दलहन क्यों आती है? मछली केले क्यों आते हैं? आप फिर कैसा विश्वविद्यालय आप चला रहे हैं? तो आज यह प्रश्न करने की जरूरत है कि कोई भी राज्य आप ले लें, उस राज्य की शिक्षा नीति, उस राज्य की भाषा नीति, उस राज्य की राजनीति, उस राज्य की धर्म नीति, उस राज्य की खनिज नीति वगैरह वगैरह। आज जरूरत है हमें अपने आप को दर्पण दिखाने की। हम देखें कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, विश्व कहाँ है। विश्व को छोड़कर हम आगे नहीं चल सकते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों का जब तक संयोग नहीं होगा, नहीं हो सकता है। और जहाँ तक भारतीयता की बात है, जब तक हम मीरा का प्रेम, कबीर का प्रेम और बिंदु में समुद्र, पिंड में ब्रह्म, ब्रह्म में पिंड, व्यक्ति में समाज, समाज में व्यक्ति,
जब तक बड़ी सोच के साथ हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम संबंध को मर्यादित नहीं बना सकते हैं। संबंध बड़ी चीज है, रिलेशन, व्यक्ति व्यक्ति में संबंध, संस्था संस्था में संबंध। संबंध ही तो दुनिया है, संबंध ही तो क्रिएटिविटी है। जिसका जितना अधिक संबंध है वो उतना अधिक क्रिएटिव है, क्योंकि संबंध से ही आइडिया भी आते हैं। तो आज पैमाना हमने विश्व भारती अपने विश्वविद्यालय में तय किया है। टीचर का इंटरव्यू अभी चल रहा है, उसमें मैं पूछता हूँ, आपको विदेश के किन किन विद्वानों को आप जानते हैं? बताइए। विश्व में नहीं जानते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर किस किस विद्वान को आप जानते हैं, और आपको कौन कौन जानते हैं? अगर आप खुले हुए नहीं हैं, कूपमंडूक हैं, कुएं के मेढक हैं, तो आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आप में वो सोच नहीं है, संकीर्णता है। दूसरी चीज है जो बाधाएं हैं क्रिएटिविटी में, वो है भोग या वासना की लालसा। उसने हम सबको जकड़ लिया है। क्रिएटिविटी के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अभी महामहिम बता रहे थे ना कि अंधेरे में भी निशाने पर तीर चलाओ। यह है क्रिएटिविटी। जो पृथ्वीराज रासो भी हम लोग जब पढ़ते हैं, जो पृथ्वीराज वीर था, शब्द भेदी वाण उसने चलाया था मोहम्मद गोरी पर। आंखें नहीं थी, आवाज का अनुसरण करते हुए उसने वाण चलाया था। तो इस तरह से आज हमारी शिक्षा में क्रिएटिविटी की सख्त जरूरत है, और इसी क्रिएटिविटी से ही हमारा समाज, हमारी संस्कृति समृद्ध होगी। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे रिलेशंस जब समृद्ध होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। और अभी जो दूषित विचार कुछ आ गए हैं, व्यक्तिवाद नहीं, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना लिव टुगेदर, उस अर्थ में मैं नहीं कह रहा हूं। आप लिव कलेक्टिवली, वो दौर गया भाई। सामूहिक जीना, सामूहिक चेतना का संवाहक बनना अभी अति आवश्यक है। और दूसरी आवश्यकता यह है कि हम कोऑर्डिनेटर बने, संयोजक बने। अंत में मैं संस्कृत के एक श्लोक से मैं अपना वक्तव्य समय की सीमा को देखते हुए खत्म करना चाहता हूं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, संयोगस्य तत्र दुर्लभः। तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिससे मंत्र का निर्माण न होता हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है, कोई मूल नहीं है जो औषधीय गुण जिसमें न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी काम का ही ना हो, मतलब कोई ना कोई गुण तो उसमें है। तो इन सब को तलाशने के लिए चाहिए एक संयोजक, और उसी संयोजक का ही अभाव है। और ये क्रिएटिविटी जो है, ये संयोजक की तलाश नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है, जो जोड़ के रखे परिवार, आपका प्रांत, आपका देश और पूरा विश्व। विश्व ही नहीं, अंतरिक्ष को भी जाइए, जड़ और चेतन को जाइए, सब एक है। तो ये भारत की क्रिएटिविटी है जिसको मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी का, उनके इस ज्ञानवर्धक और प्रेरक उद्बोधन के लिए, वक्तव्य के लिए। दिव्य सज्जनों, इस क्रम में अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हम सबके बहुत ही सम्मानित आदरणीय गोविंद प्रसाद शर्मा जी। बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में, लेखक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है NBT, उसके अध्यक्ष का दायित्व आप निभा रहे हैं। जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई, लागू किया गया, उसके अनुसार स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के ढांचे में विकास के लिए जो राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई गई थी सरकार की तरफ से, आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसके सदस्य के रूप में आपका योगदान बहुत सराहनीय रहा है और हम सबके लिए मार्गदर्शक और प्रेरक भी रहा है। आप 6 से अधिक अकादमिक पुस्तकों के लेखक हैं, संकलित रचनाओं का संपादन भी आपने किया है, और हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर शर्मा को जो पेरिस बुक महोत्सव हुआ, लिटरेरी फेस्टिवल पेरिस में हुआ, उसमें जो भारत का 32 सदस्यीय डेलीगेशन गया,
उसको उसका नेतृत्व करने का सम्मान भी प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा को मिला। आज आपकी उपस्थिति से हम सभी सम्मानित हैं। आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करूंगा प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा से उनके वक्तव्य के लिए। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, आदरणीय शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी, आदरणीय चक्रधर जी और उपस्थित साथियों, माननीय राज्यपाल जी ने जो कुछ कहा उसमें सब कुछ समा गया है। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। तो रचनात्मकता और शिक्षा को लेकर के जो बिंदु आपने प्रस्तुत किए, उसके आगे उन बिंदुओं का विस्तार तो हो सकता है, लेकिन कोई नई चीज सोचने में आएगी, इसमें मुझे संदेह है। ये बात सही है कि शिक्षा को रचनात्मकता से अलग किया ही नहीं जा सकता, और रचनात्मकता को सामने लाने में शिक्षा की अहम भूमिका है। पर इसमें केवल एक चीज व्यापकता के आधार पर विचार करनी पड़ेगी। शिक्षा से हम क्या समझते हैं? शिक्षा क्या है? क्या केवल क्लासरूम की शिक्षा शिक्षा है, या क्लासरूम के बाहर की शिक्षा है? वो भी शिक्षा है। बच्चा स्कूल में जाने के पहले बहुत कुछ सीख लेता है, तो वो स्कूल तो नहीं है। स्कूल छोड़ने के बाद बहुत कुछ सीखता है, वो भी स्कूल नहीं है। तो शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा नहीं है, शिक्षा स्कूली और गैर स्कूली दोनों है। और इसी को अपन कहते हैं औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। रचनात्मकता शिक्षा के साथ हम जोड़ते हैं। इस विषय को यहाँ जो प्रस्तुत किया है वो मुझे लगता है औपचारिक शिक्षा से किया है, लेकिन रचनात्मकता औपचारिक शिक्षा के पहले से है। आप सोचिए, औपचारिक शिक्षा कब से प्रारंभ हुई है? कब से हुई होगी? वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ की, गुरुकुलों से प्रारंभ हुई। पर गुरुकुलों के पहले क्या शिक्षा थी? नहीं, गुरुकुलों के पहले भी थी। और गुरुकुलों के पहले की शिक्षा ने ही, देखिए, व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी है और जो जानने की जिज्ञासा है, उसके कारण ही उसने पत्थर को रगड़ के आगे पैदा कर दी। और उस आग का रचनात्मक प्रयोग ये किया कि हमारे खाने की आदत जानवरों से अलग हो गई। ये रचनात्मकता नहीं है क्या? हमारा खान पान जानवरों से एकदम अलग हो गया, हमारा जीवन ही अलग हो गया, हमारे विचार अलग हो गए, हमारे संस्कार अलग हो गए, एक छोटी सी चीज के कारण। ये रचनात्मकता है। सूर्य को देखा होगा, ग्रहों को देखा होगा, पहिए का उसने इजाद कर लिया, गोल पहिया बना लिया। ये सब वैदिक उसके पूर्व की बात है, वैदिक की बात है ऐसा नहीं, उसके पहले की बात है। उसने हमारे गति के पूरे सिद्धांत को, तौर तरीकों को बदल दिया। ये रचनात्मकता है। तो इस तरीके से आप देखिए, किसी एक अनजान व्यक्ति ने कभी जमीन पर एक लाइन खींची पत्थर से या नुकीली किसी चीज से, और उसमें अन्न की पैदावार शुरू हो गई।
कृषि प्रारंभ हो गई, सबसे बड़ी रचनात्मकता है। पर उस समय तक औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन संस्कृति के विकास के मूलभूत सिद्धांत लिखित रूप में नहीं, व्यवहार रूप में अपनी आकार ले चुके थे। बात अनौपचारिक शिक्षा को जोड़ करके यदि हम करेंगे तो जगह जगह रचनात्मकता हमको देखने को मिलेगी। चक्रधर जी का कहना सही था, हर शब्द ब्रह्म है और हर पौधा औषधि है। अब इससे बड़ी रचनात्मकता आपको क्या चाहिए? हर शब्द ब्रह्म है और हर पौधा, वो जो आप बता रहे हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होता है, हर पौधे में भी कुछ न कुछ होता है, और उस मूल को यदि हम समझ लें तो औषधि के रूप में उसका प्रयोग होता है। जिसको हम व्यर्थ समझते हैं उसी में से औषधि निकलती है। रचनात्मकता की जरूरत, व्यापक दृष्टि है, व्यापक क्षेत्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब शिक्षा को परिभाषित किया और जब उन्होंने उसको आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा, देखिए, रचनात्मकता के आधार पर व्यक्ति के विकास के 3 चरण हैं। पहले वो पशु था, उसके बाद वो मनुष्य बना। तो पशु से मनुष्य बनने में उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा और बहुत कुछ नया लेना पड़ा। ये जो नया है ये उसने अपनी रचनात्मकता से ईजाद किया। और मनुष्य के बाद उसको आत्मा को समझने की बात है, आत्मबोध। पशु, मनुष्य और फिर आत्मबोध। आत्मबोध चिंतन, मनन, दार्शनिक चिंतन, चाहे वैज्ञानिक चिंतन, चाहे समाजशास्त्री चिंतन, चाहे काव्य के रूप में, चाहे साहित्य के रूप में, विश्व को समझने की लालसा। ये तीनों के तीनों क्रम आगे उस समय तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि रचनात्मकता को हम लेकर के ना चले। तो रचनात्मकता जीवन की श्रेष्ठता में है, सृजनता में है, एक विचार में है, एक भाव में है। यदि शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई छोटा बड़ा तक यहाँ सीमित है और पढ़ जाओ, लिख जाओ, आगे जा कर के नौकरी कर लो, घर गृहस्थी बना लो और अपनी इतिश्री समझ लो, यदि यह है तो वो शिक्षा नहीं है। अकबर इलाहाबादी कहते थे, जिंदगी में शेख जी क्या कार्य नुमाया कर गए। ठीक है ना? तो एक आध गलती हो सकती है, मेरा साहित्य विषय नहीं है, थोड़ा हो गया। जिंदगी में शेख जी क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर भये, पेंशन मिली और मर गए। अब ठीक है ना? अब ये रचनात्मकता नहीं है। जेके कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इल्म अलग चीज है, वो इल्म में रचनात्मकता है। उनने भी ये विस्तार से बताया कि ये तुमने समझा कि हम बहुत शिक्षित और बहुत विद्वान हो गए। नहीं, इल्म शिक्षा से आगे है। तो वो जो आगे है वो रचनात्मकता लाती है। रूटीन है तो रूटीन है। अब विस्तार तो बहुत हो जाएगा। संक्षेप में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो रचनात्मकता की बात है, बहुत संक्षेप में उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। जो पाठ्यचर्या हो गया वो तैयार हो जाएगा, 2-1 दिन में सामने आ जाएगा। शिक्षा नीति को यदि आपने पढ़ा होगा तो उसके जो मेजर प्रिंसिपल्स उसने एडॉप्ट किए हैं, रखे हैं,
उनकी संख्या 14 या 18 के बीच में है। 18। उसमें वो दो चीजें कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप। दो चीजें। नंबर एक, शिक्षा का आधार ये होगा कि वो प्रत्येक बच्चे की विशेषताएं, उसकी क्वालिटी, उसको समझे, उसको उभारे। आज क्लासरूम में जब बच्चा बैठता है तो क्लासरूम के अंदर बच्चे को, ये प्राइमरी माने आंगनबाड़ी के और ये जो शिशु वाटिकाएं हैं, वहीं से ये रचनात्मकता का विचार शुरू होगा। बच्चे की विशेषताओं को पहचानिए और उसको मॉडिफाई कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज शिक्षा के मूलभूत आधार में यह है कि बच्चे की रचनात्मकता को प्रोत्साहित कीजिए। अब देखिए, इस रूप में शिक्षा पद्धति को लाने का श्रेय 2020 की शिक्षा पद्धति को है। इसके पहले रचनात्मकता के ऊपर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। अब ये रचनात्मकता बच्चे की, क्रिएटिविटी बच्चे की कैसे आगे आएगी? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई एक पेडागॉजी नहीं है। हर बच्चे के व्यवहार को देखते हुए, उसके चीज़ों का अनुभव करते हुए अलग अलग तरीके से उसके अंदर उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो इसलिए प्रारंभिक उसमें पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं है, खेल खेल में पढ़ाई, खेल खेल में पढ़ाई। और उसके लिए एक जादुई पिटारा, एक नई शिक्षण पद्धति तो नहीं है, कई शिक्षण पद्धतियों का एक योग है, जादुई पिटारा। उसके अंदर खेल, खिलौने वगैरह ये सब कुछ है, और उसमें बच्चा रम जाएगा। और बच्चा तोड़ो जोड़ो तोड़ो नहीं, जोड़ो तोड़ो जोड़ो, वो बाजार के अंदर, बाजार में वो आता है ना, कई चीज़ें जो जोड़ देते हैं, उससे कई आकार बना लेते हैं, सीढ़ी बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं, माल बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। वो तो वो कहते हैं कि ये क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है, इससे क्रिएटिविटी आगे बढ़ती है। बच्चा इससे बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ बनाता है, और व्यर्थ कोई चीज जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि तोड़ने के बाद वो फिर उसी में से जोड़ लेता है। तो इस तरीके से एक रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पद्धति का विकास इस शिक्षा नीति के अंदर किया गया है। यह बात सही है कि मैकॉले शिक्षा पद्धति से तो रचनात्मकता की बात की ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते थे, लेकिन नई जो शिक्षा पद्धति है वो इस रूप में निश्चित रूप से एक अपना स्थान रखती है कि उसने एक ऐसे वातावरण को विकसित किया है कि शिक्षक, गार्जियन, अध्यापक और छात्र चारों मिल करके एक समाज को नया रूप देने के लिए, और रचनात्मकता के बिना नया रूप मिलता नहीं। विज्ञान भी रचनात्मकता को आगे बढ़ाता है, उसका दुरुपयोग करें हम, ये एक अलग बात है। मैं समझता हूँ कि अपनी समय सीमा के अंदर मैंने अपने बहुत बहुत आभार प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी का। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में रचनात्मकता के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने हमारे समक्ष रखा भी है, उससे हमें परिचित भी कराया है और प्रेरित भी किया है। बहुत बहुत आभार सर आपका। देवी सज्जनों, हमारे इस बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल में प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो विराजमान है। प्रोफेसर वी कामाकोटी इज कनेक्टेड विद अस वर्चुअली, so we welcome you sir, and just after welcome you sir.
I'm going to request Professor Professor Shantishri Dhulipudi Panditji. Prior to joining as Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, she served as Professor of Political Science at Savitribai Phule Pune University. She received her postgraduate degree from Presidency College, Chennai, and completed MPhil and PhD in International Relations from School of International Studies at Jawaharlal Nehru University. And she also has a diploma in social work from California State University and postgraduate diploma in peace and conflict studies. ये स्टडीज़ जो आपने की थी वो आई थिंक उपसला यूनिवर्सिटी से आपने की थी और इस मौके पर हमारे बीच हैं आपके तालियों के साथ उनका अभिनंदन निवेदन रिक्वेस्ट प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित जी से कि वे अपने वक्तव्य के लिए उद्बोधन के लिए पधारें. ఎల్లార్కుం వణక్కం అందరూ మహానుభావులకి నా శతకోటి వందనాలు నమస్కారాలు. सबको मेरा नमस्कार. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सगळ्यांना मान्यवरांना माझी नमस्कार. I think Honorable Governor of Chhattisgarh, respected Vishwa Bhushan Harichandji ji, I'm so happy that you are chairing our session, and I'm one of the great, you're a great writer and novelist yourself, sir. Professor Chakradhar Tripathi, Govind Prasad Sharma ji, Professor V. Kamakoti, and ladies and gentlemen, most eminent poets and literateurs. We have had the literary interpretation of creativity. I'll do the social science interpretation of creativity. Let me at the outset thank Sahitya Academy, with which my late father, Dr. Dhulipudi Anjaneyulu, had a very close relationship, especially as a Telugu writer, and also with the former president of Sahitya Academy, Uma Shankar Joshi, whom I called as Bapuji, and the then secretary Krishna Kriplani. I think this is a great institution. I congratulate them for this gathering. Thank you so much. Coming from one of the oldest languages in the world, Tamil, and the Sangam literature, the creativity of the oldest language in the works of the Tolkappiyam, Silapadikaram, and Purananur is extraordinarily important. I would like to start my idea of creativity by invoking from the poem 192 in Purananur that might probably give us some clue on the depth of the richness, maturity, and wisdom and the urban culture of Tamilagam and beyond 5,000 years ago. Even the Honorable Prime Minister quotes from this. It quotes, "Every city is your city. Everyone is your kin. Failure and prosperity do not come to you because of others, and others have sent them, nor do suffering and the end of suffering. There is nothing new in death. Thinking that living is sweet, we do not rejoice in it. Even less do we say, if something unwanted happens, that to live is miserable. Through vision of those who have understood, we know that a life with its hardship makes its way like a raft riding the water of a huge and powerful river, roaring without pause as it breaks against rocks. Because the clouds crowded with bolts of lightning pour down their cold drops of the rain, and we are so amazed at those who are great, and even less do we despise the weak." This translation has been done by Jeffrey L. Hart, the great Tamil scholar from the United States. So I would rather look at creativity from what I would say the social sciences, meaning one of the major, or the humanities. Sir, I think every policy is good, but the problem comes is when we have to implement it. Do we implement a good policy like NEP 2020 creatively? And creatively, when we have to do it, I think first problem I would see is we prioritize rote knowledge still. Examinations are important, marks are important, entrance exams are important, MCQs are important. You don't have to think. You can do inky, pinky, ponky.
had a little donkey, and where it stops, you mark it, you have good luck, you get through it. So there is a marginalization of creative skills. How do we get over this? I would say one important thing that at least most universities should follow is what I call the 7 Ds. Democracy, difference, development, diversity, dialogue, dissent, and discussion. Without these, I don't think creativity will develop. I think all languages of India are beautiful, and let me once again congratulate Sahitya Academy for having 103 languages here. I really appreciate it, and I think to me every language is as great as every other language. If my mother tongue is great, so is your mother tongue. And I think this is the essence of the Indic civilization. Ekam sat vipraha bahuda vadanti. Truth may be one, but there are several paths to it. So this is the only civilization that celebrates diversity. No other civilization. It is the highway or my way. So this is something I want to tell you all, and let us continue with it, because uniformity is not unity. Everybody should look alike, everybody should speak one language, everybody should have one religion, everybody should have one color. It doesn't work. Difference is beautiful, and I think that is extraordinarily important, and that is the first thing I think we should bring in, because that will bring in holism, because even our 5 fingers are not the same. So this is one thing. The second is I would like to say that as George Bernard Shaw said, my education was interrupted by school, otherwise it was continuous. Why? Because in the school I'm made to read books written by the school superintendent. At least in jail, I don't have to read the jailer's books. I can read what I want. So this is one other thing of prescribing syllabus and saying only these books should be read, other books cannot be read, is something that I think we should desist from. One of the greatest mathematicians, Srinivasa Ramanujan, did not pass his 12th standard. He failed in every subject except mathematics. And he is the man who knew infinity. Even Professor Hardy asked him, you are not even educated, you have not even done a bachelor's degree, how do you write such equations that none of us can understand? He said, Goddess Bhagavati comes at night and writes on my tongue. This is the greatness of this civilization. So please, teachers, those of you who are teaching, please permit this creativity. I would also, as a woman, like to flag that this is a feminist civilization. Only civilization where the feminine is not damned. I would call Draupadi the first feminist, Sita the first single mother, Kannagi the first citizen activist, and Madhavi the great courtesan poet. So it is very, very important that we celebrate, and please remember in Indira's cabinet, the most powerful portfolios were with women. Lakshmi, the goddess of power, wealth, Parvati, the goddess of power, and Saraswati, the goddess of knowledge. So knowledge is feminine, and Saraswati was the woman who went beyond marriage and motherhood. Today people talk about women remaining single. Why are we not reinterpreting these feminist icons? I don't think any other civilization has such icons. Finally, I would like to tell you the Pancha Pativratas are the women who broke rules. They were not the Pativratas who accepted rules. So this is the civilization that says, break rules, come new. The most creative civilization. Hence, once again, I would like to thank all of you, and I would only like to end with one of my favorite poems of T.S. Eliot. We are all the hollow men and women. We are the stuffed men. Leaving together headpiece filled with straw, alas, our dried voices when we whisper together. He said, between the conception and the creation, between the emotion and the response, falls the shadow. Life is very long, between the desire and the spasm,
between the potency and the existence, between the essence and the descent, falls the shadow. And I think this is the thing that we have to bridge. Once again, thank you for giving me this opportunity. Namaskar, Jai Hind. बहुत बहुत आभार प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उनके वक्तव्य के लिए, उनकी सोच में जो नए आयाम हैं और नई पहचान है उससे भी हमें परिचित और प्रेरणा देने के लिए. Now we will connect with Professor V. Kamakoti. He is joining us from Chennai online. As you know, Professor V. Kamakoti is the director IIT Madras. His areas of specialization are computer architecture, information security, and VLSI design. He heads MIT funded microprocessor development program and information security education and awareness program at IIT Madras and information security education, and along with that he is a member of the National Security Advisory Board and is on the technical committee of NSE and RBI. He is a recipient of DRDO Academic Excellence Award, ISA Techno Visionary Award, Abdul Kalam Technology Innovation National Fellowship, ACCS Lifetime Achievement Award, IBM Faculty Award, and Vasvik Industrial Research Award. So please put your hands together to welcome Professor V. Kamakoti, and I will request him to present his address before us. Thank you very much, sir, and thank you very much for inviting me to the function. आज कुछ ऑफिशियल वर्क के कारण मैं आज वहां सभा में उपस्थित नहीं हो सका, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं. Honorable Governor of Chhattisgarh and all the distinguished speakers who spoke before me. The Vice Chancellor JNU mentioned that she'll give the social aspect of creativity. I'll now try and give engineering aspect of creativity, how engineering education can be really boosted by a study of literature, boosted by how the creativity can increase with the understanding of many art forms. And I'll also give some examples in the duration given to me. So I just want to remember Dr. Abdul Kalam, who actually had been one of the prime source for all students across the country. He had met several lakhs of students, and some of his very profound statement specifically targeting creativity. And as the VC told just before, that he was also against this sort of the rote education and the inky pinky ponky that she told about this multi-objective questions, etc. And he actually was one who was extremely vocal in saying that the students be allowed to do what they want rather than what the parents want. And this is very important. Now, as a director of IIT Madras, when I see the BTech students, many of them I will actually come and join because their parents have made them make that choice rather than their own choice. And after 1 or 2 years, they basically now understand that their real quota is not this particular thing, but they want to go to a different discipline. So how the national education policy has also helped very much in these type of situations. I'd like to briefly touch upon these points as a part of this presentation. Dr. Abdul Kalam actually mentioned a very nice set of statements. When learning is purposeful, creativity blossoms. When creativity blossoms, thinking emanates. When thinking emanates, knowledge is fully lit. And when knowledge is lit, the economy flourishes. So he made a very clear line wherein he said that from creativity, there is a very clear path to economy upliftment. Now, as we are moving towards 2047, our 100th year of independence, we certainly want that India be a superpower, become technologically independent, and also that we basically have a lot more of innovation that happens. And how can a country become technologically independent? The country can become technologically independent only if we own our ideas, if we protect our ideas, and we keep our ideas, our intellectual property intact. And one of the most important things that has happened as a part of the national education policy is there is enough amount of or lot of stress
on what we call as innovation and entrepreneurship. And the most important ingredient for innovation is that we need to basically get in lot more of creativity at a very, very young age. And that is precisely where I'll be stating a couple of examples that happened personally where creativity actually helped me enhance my studies. The first one was that when we all as young research scholars start writing papers, one of the things that we find is that there is complete disconnect. The first paper any research scholar writes today or any report is made today by a young student, there's a complete disconnect from the first paragraph and the second paragraph, the first section and the second section and third section onwards. And this connectivity is something which only gets refined over a period of time, and you spend quite a significant amount of your PhD time, like at least 2-3 years before you are in a position to write a good document that is logically coherent. And so my father is a retired professor of Sanskrit, Professor Virinathan, and so I had the fortune of going to him and requesting him to teach me Abhigyana Shakuntalam. This is a text by Mahakavi Kalidas, and one of the great things that we see is that when we read the text, the drama just comes in front of us. The description is so good, and when we go from one scene to the next scene, we see that continuity, how it is established. So a mere complete read of the entire drama, Abhigyana Shakuntalam, actually enabled me to write good, logically coherent papers. And after that, I have published around 200 papers. But everything I owe to that initial training of what we get from Sahitya or the literature. And this is something very important. And many of our Indian knowledge system, the literature here, gives you that very nice way of getting this connect and be logically coherent. And that basically comes from the creativity. How you put forward your ideas, how do you explain these ideas so that it becomes very clear rather than beating around the bush, etc. And this precision is what we learn from some of the very old Indian literature. Similarly, it's the Tirukural, where you have just 4 or 5 words or maximum 10 words per each of these phrases, and that conveys meaning where translations run to pages for many of these Tirukural. That precision, clarity and cogency through brevity is something we get out of literature, and that essentially makes you more creative in trying to explain your thought process. The second is a very interesting thing. That I also learned music, and in my +2, I had a experiment called sonometer. Sonometer is something like we need to find the frequency in which a particular wire oscillates, and this is very similar to the violin that I used to play. And the tuning of the violin, we need to be very precise, and then you also know the frequency, right? So a tuning fork will be given, and we need to adjust the sonometer to find what is the frequency of this tuning fork. So the education in violin, basically, the moment I heard that frequency, I know that this is this particular frequency, and I was able to do a reverse engineering to get the sonometer in correct place. And when I put the tuning fork, there'll be one paper which, because of the resonance, will fly, and it flies. So this is the real connection between what you look at science and the creative arts. And this creativity essentially can be used to educate people much quickly to get many more ideas in this. And there are also many chemical equations where you need a lot of numbers. There'll be some C6H15 O7, etc. So all these things, in music there is this mathematics. When the mridangam or the percussion instruments are played, there is something called spaces which we call as carveys, and there are this thing. So every equation, I just mapped it onto some carvey and memorized that carvey so that I could reproduce this equation. So these are some interesting things that come up. And when we look at the way the Vedas are basically educated, there are different methods.
One is called Santai and Tiruvai in Tamil, we call it, where the student repeats it twice, then repeats it 4 times, and that means it is a permanent memory till death. So that is a very, very interesting way of educating the Vedas. And then there comes the Ghana and the Jata Parayana, which essentially means that the way it is organized, that there are several times you go repeat the syllables back and forth. And in those days, in earlier days, when there was no way by which we could document this, there was no writing, there was no paper, ink, print, etc. Everything was through word of mouth, and people had to memorize this. These all created a very good pattern by which nobody misses even a single vowel or a consonant, and also the frequency, the udatta and anudatta. So these are all very interesting patterns that had basically come that we see in our Indian knowledge systems that bring up this. So to sum up here, the national education policy has given a very good opportunity for people to now move across disciplines. A violinist to basically study data science, for example, and an engineer to study medicine. So all these things have opened up, and what we now term as an interdisciplinary education. Interdisciplinary education is extremely important to create to enhance creativity, specifically in the area of education. And this creativity is basically going to bring us lot of new things, new research topics, new system building to meet many of the technological and social challenges that we'll be facing. So thank you very much for giving this opportunity and also sharing my ideas. I really miss the physical presence there, and I'll take the next opportunity to be there. Thank you very much. Thank you so much, Professor V. Kamakoti. एजुकेशन में क्रिएटिविटी के इतने सारे एस्पेक्ट, टेक्निकल से लेकर सोशल, साइकोलॉजिकल और तमाम तरह के आयामों को हमने समझा है, देखा है, सुना है। और ये सच्चाई है कि नेचर सबसे बड़ा क्रिएटर, अकेला क्रिएटर है, और उसको या तो इमिटेट करते हैं हम या उसको एक्सप्रेस करते हैं। और जितना ज़्यादा नेचर के क्लोज रहते हुए हम ये काम करते हैं यानी एक्सप्रेस करते हैं, उतनी ज़्यादा उसमें एक गहनता, गहराई, प्रभाव उसका पैदा होता। और नई शिक्षा नीति उसी क्लासरूम से लेकर नेचर तक की यात्रा को उस दिशा में लेकर जाने की एक कोशिश है। बहुत बहुत आभार इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय का, व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर वो हम सबके बीच आए और अपना उद्बोधन भी और मार्गदर्शन भी हम सबको दिया है। आभार प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी, प्रोफेसर शांतिश्री दुलीपुड़ी पंडित जी, एंड ऑल्सो वी आर थैंकफुल टू प्रोफेसर वी कामकोटी हु हैज जॉइंड अस फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम मद्रास, IIT मद्रास। मैं इस कंक्लूड करने से पहले मैं माधव कौशिक जी, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा। साहित्य अकादमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं, माननीय राज्यपाल महोदय को इस अवसर पर वो भी करेंगे। साहित्य अकादमी के लिए गौरव की बात है कि हमारे उन्मेष में आज दूसरे दिन के इस पहले सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में ऑनरेबल गवर्नर छत्तीसगढ़ आदरणीय विश्वभूषण हरिचंदन जी का शुभागमन हुआ। आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों। कार्यक्रम के अंतिम चरण में राष्ट्रगान के लिए, उसके बाद ग्रुप फोटो होगी और फिर हम प्रस्थान करेंगे। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे
जय 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 हे। सर एक ग्रुप फोटोग्राफ सर, जस्ट 1 मिनट सर। ग्रुप फोटोग्राफ में माधव कौशिक जी, कुमुद जी और डॉक्टर राव, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आ जाएं। एक पहले ग्रुप फोटो हो जाने दें प्लीज। एक मिनट। आपको ये जानकारी दे दूं कि 15 मिनट बाद यानी 12 बजे हमारा अगला सेशन शुरू होगा। सिर्फ वी हैव 15 मिनट्स ऑफ टाइम, 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक इन बिटवीन। और उस सत्र में क्रिएटिविटी के कुछ और नए रंग हम देखेंगे। लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स, जो साहित्य है और अन्य कलाएं हैं, उनके बीच के रिश्ते को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुस्तक भेंट करना चाहती हैं रायपुर से ही?